हैं कि थोड़ा आज लाइव स्ट्रीम कर लिया जाए। बहुत दिन हो गए थे लाइव चलाए हुए। देख ला जब भैया यही है, कोनो खास नहीं खे, नॉर्मली बस रूम है अपना एगो छोटा सा, यहीं पे अपना सब जितना होता है सब कुछ, यही एक छोटा सा है बस रूम, इसी में तैयारी होता है अपना। अभी तो वैसे चलो जा आज तनी दिखाई दी तो अंजना के ऊपर से नीचे ले पूरा लाइव तो चालू कर ही, बैटरी डिस्चार्ज बा, फिर भी थोड़ा सा लाइव घुमा दी, सिचुएशन बा देख ला जा तो अनो जना ये छोट मोट एगो रूम में बस अपन बैठ के तैयारी चलेला, ठीक देख ला जब ये कहाँ उठाए हैं तो बोल रहे हैं बात करने के लिए, बात कर लेना। हाँ अरे तुमको बोल रहे थे ना कि हाँ बोलो, तो हम बोले कि भाई तब वो रोहित तो नीचे है। किस चीज के लिए? हाँ तो बात कर लेना, वो तो कॉल किए तो तुम थे ही नहीं। देख लो जब ये संगम बिहार है, संगम बिहार का लोकेशन है ये। पढ़ाई वढ़ाई होता है कि यही होता है बस? पढ़ाई होता है कि यही होता है सिर्फ? हाँ स्कूल इस समय बंद है सब? हाँ तो स्कूल नहीं जाती होगा? अच्छा
इस संगम बिहार का लोकेशन है ये। नॉर्मली ये बस छत पर पेड़ पौधा जेके उगाव करेला अपन उगा लेला साग सब्जी।
welcome to Geeks Study. We would be discussing the problem known as maximum sum without adjustment. So, this problem is a variation of a very standard problem of dynamic programming. So, let's just discuss this. So, here in this problem, you are given an array itself. The array is something like ये विनेगर यहाँ पे कहाँ रखे हो रोहित? हाँ भैया विनेगर है क्या यहाँ पे? अरे ये वो विनेगर वो वाला नहीं है हाँ विनेगर साफ करने वाला विनेगर है अरे देख अभी दूसरा जना का पाली चला था करीब आधा मार चली छोट रूम छोटा मोटा अपन काम चल जाई इंस्टाग्राम पे नहीं यूट्यूब पे है कोई देख रहे हैं हाँ साथ के ही हैं लोग कितने जने हुए इस समय यार लाइव में पब्लिक बहुत कम आ रही है तो पहले जब लाइव आता था ना तो उस टाइम सारा 800 900 लोग हाँ अभी अनजान व्यक्ति होंगे ना अगर तो ये जैसे वो स्क्रॉल करके नहीं आते हैं सब हाँ देखते अरे रहते हाँ हैं वो पहले चलता नहीं था हाँ, यूट्यूब पे हाँ। जैसे अनजान लोग आ जा रहे हैं एक अभी जाकर देखोगे ना यूट्यूब पे जैसे लाइव वाले सेशन में हमारे तो जितना आज तक जितना गया हूँ लाइव हर वीडियो पे 3000 4000 2500 1500 ऐसे लाइव पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे व्यूज अरे गया हाँ हुआ हाँ है। ये वो बीच में आता था ना जो यूट्यूब करो तो फिर हाँ। लाइव वाले लोग आने जाते थे अब नहीं आ रहा ना वो हाँ अरुण भैया दिल्ली में आई अभी दिल्ली में आए अब आई भी एक फरवरी के कहाँ से कि भाई अभी फिलहाल पेपर हो ना बा तो अभी दिल्ली में चलता वैसे यहाँ सही है घर के अपेक्षा यहाँ ठीक है सुकून बा आराम से पढ़ लो यहाँ आराम से पढ़ सकता हो कोनो दिक्कत ना और सब बताइए अरुण भैया हाल चाल Then you saw the one 7. You thought I should take 7. But if you take 7, you would lose 10. हाँ हाँ वहीं पे If you see here, वहीं पे you है would find that here 5 and 10. If you focus on the bigger number, it might be a scenario that if you compare 5 and 10, the bigger number is 10, and selecting 10. शादी है फिर शादी बिता के फिर आवे के तो But if you select 10, then you would lose. लाइब्रेरी में उतना मजा ना रहेगा जल्ला दो So it रोहित might happen वो लीड दे दो हमको तो compare two things and you take the bigger तो फिर रहने दो select कोई मतलब नहीं होगा फिर वैसे भी बोलना ही पड़ेगा बोलना तो पड़ेगा ही भैया would have a very bigger value which is very profitable. So this would cause all the confusion. So if you just what is the very first thing that if I want to लाइब्रेरी की अपेक्षा ही ठीक है if I want to increase फ्री वाईफाई हो अपन रात दिन आराम से focus on large element. पढ़त रहो This is the very simplest approach you can think of. If I focus on large element, then I might lose the larger element. So you would come to the conclusion that there is no proper way to just select a way to select all the numbers. संघ की राज्यभाषा और कार्यालय भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी हुई आर्टिकल 343 क्योंकि आप ऐसा हो सकता है अगर आप स्मॉल वाला सिलेक्ट करो तो ऐसा भी हो सकता है एंड में जाके ये साला बैटरी हो यही में 100 के जगह साला फजियत if you select let's say instead of selecting the large elements you start selecting the smaller elements
It might be true for some cases, but let's say this is 1 itself. So then you would get 5, then you would get 1, and here you from here you would get just 5, which is not a profitable trade. You could have made up 10, 10, and then again 5. What I meant to say is, instead of, let's say, you told Siddharth, if we can't select the larger element, I would select the smaller element. So if you select, if let's say this element, if let's say instead of here, this is 1, and you would say that I would select the smaller element. So you would select this, you would select this out of this, you would select this. And the cost would be 5 plus 1 plus 5 that is equals to 1. And the correct solution is 10, 10 and 5 equals to 25. So if you focus on the big element, there will be some test cases to fail you. If you select smaller element, there would also be some test case to fail you. So there is no certain way to select the element. So what we do is here, let's take a very simple example. Though if you have read Robert, so if, I don't know how many of you have read, but how many of you, so if you are from a ICSE background, you would have read the poem by Robert Frost, The Road Map. Okay. So here you are lost in the woods, and there are 2 paths, and you can't really find a way to select either of the paths. So in real life, the way is to select is the way to select path is that you travel both the path, and whichever is better, you would select that. So we would do the same thing here. If there is no certain way of finding the maximum, find maximum subsequence, there is no certain way, we would find all possible subsequence, and we would return the maximum, and we would return the maximum sum out of those. So whenever we come to the conclusion that we need to explore all possible ways, explore all possible is nothing, but we need to conclude that this problem is a difficult thing. जब भी ये कहा जाए कि सब कुछ करके देखो, तब ये प्रॉब्लम है ऊपर शुरू. So now let us do this. So how would we do this? Let's just see here. 3, 2, 7, 10. Let's start with the very first index. So for the very first index, we have 2 options. Either to include that in our solution, or to not include that in our solution. This is take, this is not take. This is for the first index. Let's talk about the second index. The very first option is take 2. So if you take 2 after 3, this is not possible. So you can't really take 2 after 3. So you need to move forward, and you need to ignore that is not take. So both would be 3. And here, you have not taken 3, so you can take 2 or not take 2, because you are free to do that. Taking a particular index is a provision if you have not selected the last index. You can write a statement here. Next. You can just do an operation from this. So now, if I have not selected the last one, so I can select 7, that would make it 3, 7. I can ignore 7. If I have selected 2, I don't have any option but to ignore 7. Okay. Now, after doing this, let's talk about the last index. So if you have taken 7, there is no provision to take 10. So we can't really take 10. We can ignore 10. That would make it just 3 and 7. If we have taken 3,
if you have ignored 7 in the last step, ignored the 7, so now you can take 10, 3 and 10. If you have just taken 2, so you can always take 10. So these are the probable options. The very first one is 3 and 7. Next one is 3 and 10. The next one is 2 and 10. These are the 3 options out of this. The answer would be the maximum out of this, that is 13. That is this. So the answer is 14. So this is how you would proceed. Okay. So there is 2 options for us, that is take or not take. We would make that. So if you have solved out add coded DP contest and that is problem, you would get a hint of this problem. There are many problems. एक मिल गया था And the major take एक मिल गया था हमको क्या एक मिल गया हमको क्या मुझे समझा नहीं मंगाए थे ऊपर था अच्छा ये भैया वो भैया वाली है अब भैया को कहाँ लगेगा भैया को पूछ लेना है ना क्योंकि ना वो रखते हैं शुरुआत करते हैं उसके बाद वो रख देते हैं साइड में हर किताब अब जरूरत ही नहीं है उनको कुछ काम किसी कॉपी किताब का नहीं अभी भी पढ़ते हैं भैया वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वैसे दिक्कत नहीं है मैं पूछ लूंगा मैं तुम नहीं पूछ पाओगे हम पूछ लेंगे क्योंकि ये किताब पे वो लिखा हुआ है ना क्या कंपनी का नाम हाँ और ये उसी को मिलती है जो मतलब है ना जिसने कंपनी ज्वाइन करी है वगैरह तो अच्छा हाँ तो मतलब तरीके से समझ ना वो मेमोरी टाइप की है ये समझ रहे हो क्या समझ रहे हो ना जैसे मान लो इसीलिए कुछ लिखा नहीं होगा हाँ। छोड़ दिया ट्रॉफी टाइप समझते हो ट्रॉफी मिलता है किसी को वो उस सामान की है ये तो मतलब समझ रहे हो ना उस take not take is used in 0 1. जैसे हिसाब किताब के लिए Take or सही है not take comes into picture in 0 1. किसी चीज का So I हिसाब would किताब करना suggest है you तो गांव में तो हिसाब करना पड़ेगा बेस सही में होता है गांव में तो हिसाब होगा ना इसको भी कॉपी बनानी पड़ेगी अलग से गांव के लिए तो हर एक रुपए की हर एक सामान कितने का आ रहा है और उसमें से जैसे घबरा कौन करेगा लाइव चल रहा है मैं आप लाइव क्यों चला देती हो जब हम बात कर रहे होते हैं क्या करे ऐसे पड़ रहा है चैनल तो चला के छोड़ दो हाँ कुछ तो now if you अरे भी वो स्लाइड बोलने नहीं आ रहा क्या लोगों पास जा नहीं रहा क्या वो अब वो सिस्टम खत्म हो गया तो पहले ऐसे शॉर्ट देखते रहो तो लाइव स्ट्रीम आ जाता था किसी का भी ऐसे करते रहो हाँ वो सही था ना भैया एक बीच हुआ है तो खूब सब्सक्राइबर गेन हुआ था खूब व्यू गया था उसी तब से? हाँ अच्छा फिर बीच में लगता है बंद हो गया साला बंद कर दिए वो लोगों ने वो अच्छा था ना मतलब जिसको मान लो जो नॉर्मल बंदा भी है वो भी ग्रो कर सकता था जैसे ना नॉर्मली कोई देख रहा है देखते जा रहा है बस टिप दिखता था सब्सक्राइब हो गया सही जैसे टिकटॉक घूमता गया टिप दिया सब्सक्राइब हो गया ऐसे 50 लोग 40 लोग गए तो उसमें 5 लोग 10 लोग कर देते थे अरे मैंने देखा था उसमें था एक मुसलमान आंटी थी वो भी कर रही थी अपने बच्चे के साथ नीचे कोई आया था अरे उनकी दोस्त है किरण की observe नहीं पूरा ऐसे प्लेट लगा हुआ अरे था हाँ मैं कह रहा यार ये कितना recursion ऐसे ही तो मेरा दोस्त आया था ना हम देख के सब हो रही है यार एक प्लेट में पूरा ऐसे एक बिस्किट फेंका गया अरे मैं कह रहा अरे बाबा सुनोगे मैं कह रहा कि ना एक बार मेरा दोस्त आया था घर पे तो उसके लिए मैं बिस्कुट ला के रखा था नमकीन ला के रखा था 5 वाली बिस्कुट 5 नमकीन आया मैं कह रहा यार थाली के बर्तन कुछ मिल नहीं रहे हैं मैं लाया पन्नी फाड़ा मैंने कागज लाया ऊपर से फाड़ा मैं ये ले भाई खा ले so recursion would be चले गए कि हैं अभी very good तो नीचे है शायद अभी जब पानी नहीं भर रहा तब तो थी अभी भी हो सकती है मैंने भी 1.5 घंटे चलेगा वो राउंड चलेगा complexity and if you like write a larger खाना कुछ है नहीं test case you would see that there are overlapping things like we are computing the same thing for a game so we would need to memorize it now let's memorize it directly first we would write the recursive and then we would just memorize it and that would solve the this so what we would do is we would write the recursive so I would write int recursive so we have the index int I we have the index and then we have the given array that is int arr
Instead of int ARR, I would just write because I'm a very lazy person. Okay, int ARR, and so we just need the index at this point. So if we have reached the very end, that is very start of that, we would return that. So if there is only one index, that is if I is equals to 0, we would return a of I. Okay. If by chance we have reached this position